ख्याल से फिर से ही करना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया ना। वर्क के जैसा शिवा वो तो सर ने फोटोग्राफी बताया था। वर्क के इक्वल्स टू we are not running the fan here, so we want fan. It's okay. And here 146. Okay. yeah. Okay, so I think some of you attended the last class. So what is work in physics? कुछ काम करना की ट्रांसलेशन हो साइंस में Sir, when pushing or pulling what? sir, when force is applied on something, on an object or when a force displaces something, Yes. body. When the force displaces the body in its direct, okay, then we say the work is done. So work is said to be done. Said to be done. When a force acting on a body displaces the body in its direction. So where is the work done? On the body. Right? Work is said to be done on the body when a force acting on it displaces the body in its direction. So is this definition clear? So two things are needed, the force and the displacement. When both are happening, then only we will say work is done. So suppose this is the body, it's kept on some surface. Let us say a force acts in this direction, coming. So this force displaces the body, say from here to here. It is the new position of the body. Okay? When we say work done is equal to force into displacement. That is W is equal to F into S. This is the formula for work. Okay. So what is the unit of work? Joule. Unit is, what is the unit of force? Newton. So Newton and meter. Newton meter. So force is Newton, displacement is meter. We call Newton meter as joule. Okay. Or P
Yes. So write this definition. All of it. Somebody just pick it up. सबने साइन किया क्या? राइट कौन है? राइट ये सब तो करा दिया था करा दिया था लेकिन बहुत टाइम हो गया मैंने सोचा क्विकली विल रिवाइज सो और क्या कराया था आपने एनर्जी को ये था कि एनर्जी के टाइप्स को बताया था हां और now have I told you what is positive work what is negative work हां क्या है पॉजिटिव वर्क बताओ when force and displacement is in the same direction. So positive work में बस ना और बच्चे हैं हाँ चार बच्चे so positive work पॉजिटिव वर्क में क्या होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन सो तीन टाइप के वर्क होते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन वर्क डन जीरो कैसे होगा जीरो या तो फोर्स जीरो हो कैसे जीरो होगा ये फोर्स कहाँ लगा हुआ है इधर इधर मूव हो रहा है सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन फोर्स भी इधर है डायरेक्शन भी इधर डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में से कोई भी जीरो होगा नहीं फोर्स तो रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर है फोर्स की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव होगा ठीक है विल सी दैट सेकंड इज नेगेटिव वर्क यस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in opposite direction ठीक है इसका एग्जांपल क्या होगा लेट्स से यू हैव अ बॉडी फोर्स इन दिस डायरेक्शन and displacement in this so this is positive work both are in the same direction यहाँ पे suppose the body is on the surface right now when the body is moving in this direction right this is the external force but the frictional force acts here frictional force acts between the body and the surface so this is friction because this body suppose किसी ने धक्का देके छोड़ दिया now this body is moving ahead only but due to friction it will stop got it so let's say this body was moving in this direction so I'll not show force suppose this body was moving already in this direction so what is the force acting on it opposite to the direction of displacement okay समझ आया what is the negative force कब लगता है negative force when force and displacement is in ठीक है कौन सा force opposite है frictional force ठीक है only that now the third type is zero work so when is work done zero so when the force acting is 90.
There are multiple things. So work definition is force into displacement. So when the force is acting, but no displacement is produced. Like if I push this wall, I am applying force. Is the wall moving? No. So no work done. And the second situation is when the force acts perpendicular to the displacement. Okay, so there are two cases. When force applied does not produce any displacement. When we say work done is zero, what is the example? Pushing of a wall. Okay. Second, force acting perpendicular to displacement. Again, so what is the example of this? So suppose there is a person who is walking like this by keeping a weight. So he is walking in this direction. So displacement is in this direction. What is the force? Weight is downward, right? Weight of the body is downward. Yes. Did you sign the attendance? So understood? In this case, force is acting perpendicular to displacement. Yeah. Attendance sheet भेजना. So force acting perpendicular to displacement. What about the next example? Or the example? कोई बाकी है क्या? Take it easy, easy. Relax. यार उसको कोई मिल जाएगा? मैं कहाँ से? सूर्यन जी. Keep it down. Otherwise it will fall away. और कोई एग्जांपल इसका जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर. कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो. एक साथ मत बोलो. I guess जब हम खड़े रहते हैं तब हम फोर्स लगा रहे हैं. हमारा वेट. तो थोड़ी. तो फर्स्ट स्टेप देखना. फोर्स तो है और डिस्प्लेसमेंट जीरो. तो ठीक है. लेकिन और रिवॉल्व. यस. कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन कर रहा है अराउंड एनी ऑब्जेक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस और अर्थ अराउंड सन, तब उसमें क्या हो रहा है? वर्क डन इज जीरो. व्हाई? हाउ इज फोर्स? फर्स्ट इज दिस. So we got a question in exam that give an example where work is done but the displacement is zero. Work is done but the displacement is zero. Like the negative work or zero. So I wrote typing. Say that again. Work is done. Force is acting. Work is done but force is not there. Yes. Yeah. Because you can't say what did you say earlier? Displacement is zero. I said displacement is zero. So displacement has to be there. Without displacement, there is no work. Force may be zero, right? Yeah. So there may be force zero, but there is still work done. So typing is the correct example. Typing. Yeah. Like you sitting in one place with the work is done. That is not work. That is not regarded as physical. Yeah. See, when you're like when you're sitting and reading, then also like you get tired, right? When you're sitting and reading, you get tired. But that doesn't mean you have done any physical work. Oh. So
So let me say this is physical work. We are talking about physical work. Okay, so that is not a correct example, I think. Our body needs to be motion, right? That Body needs to be moved or physical While work. walking, While walking, you are doing what? Negative. Friction is acting on displacement. the body is moving, right? So I'll ask you a question, then you answer. So when walking, right? So there is a friction between the person walking and the surface. Okay, but friction is opposite to the motion. So there is a work done, negative. So my question was, any example where work is acting perpendicular to the displacement? So one is Earth revolving around Sun. Earth revolving around Sun, right? So the question was, show me how the force is perpendicular. This is Earth, this is Sun, right? Earth is revolving like this, circular motion. Okay, it is circular motion. So where is the force? Force of attraction. The gravitational force will always act along the center joining the Earth and Sun. Okay, the gravitational force I told you last chapter. So that force is acting towards center of Sun. But what is the displacement of Earth? Let's say Earth is moving like this. So this at every point there is a 90-degree angle between the displacement of Earth and force acting. Okay. What is the angle between the force and displacement? 90 degree. All such motions. 90-degree formation is compulsory. Yes. Careful, guys. Keep the bottle towards the wall. मैंने तो बॉटल ही नहीं ला Speak when required. Okay. Don't speak unnecessarily. ये बोला मैं तो बोला जो भी है. Last time I'm telling you. उसके बाद भेजूंगा बात करने के लिए. ठीक है? Anybody. So focus on what I'm saying. So the first case is. So what is this type of example? A person keeping a load on head and walking. Right? What is this? So person keeping load on head. Not keeping with load. Okay. While keeping is working because he is lifting. So person with load on head while and walking. There is work. So he is not doing any work. No physical work because weight is downwards and displacement is forward. So what is the angle? See, weight is at this point, weight is downward. Right? This way. So these are the two examples. Can I switch on the AC? Okay, you want? Go ahead. Now to answer the question which was asked in exam. So you said there is a motion of the body, right? But is it possible that it is doing work when no force is acting on it? Is it possible? So suppose a body is moving with constant velocity, uniform motion. Uniform motion. Uniform motion. Right? No force is acting on it, but still work is done. So, is any work done in this case? Force is zero. Force is zero. So work is not done. But body is still moving. So whenever body is moving with a uniform velocity, so no work done. Force can be zero, but displacement can never be zero. So no work done since force is equal to zero. Because uniform motion mein V is constant. V constant means acceleration is zero. Acceleration zero means force is equal to mass into acceleration. So force zero.
So here there is displacement happening, but force is zero. So look here, what is the definition of force? Force zero, then also there is no work done. So this was the question. Is work done zero while the body is still moving? So yes, in case of uniform motion, like on ice, right? So here, and there must have been written ignore friction. Okay, so friction also we are ignoring because on ice there is no friction. It's very negligible. So assumption, no friction. Okay, so small f is also zero, so there is no negative work. And this is moving with constant velocity, so there is no force. Got it? So f is also zero in this case, and f is also, this friction is also zero. Still the body is moving. Because if somebody pushes, initially somebody pushed, but now body is moving on its own. Neither there is friction nor there is force. The body is moving with constant velocity. In such situation, work done is zero. Okay, so these are the different situations of three examples I have given. What is the third example? No work is done when body undergoes uniform motion without friction on it. Okay. Any questions till here? Did we do numerical also? Numerical नहीं किया था, example वगैरह कुछ नहीं किया था. All right. Have you written everybody left side? Yes. Then I erase left side. Yes. Okay. So there is a question. So there is a porter who is lifting a load and keeping on his head. Okay, so he is lifting the weight of whose mass was 15 kg. Okay, he is keeping on his head, right? And he lifts it by 1.5 meter above the ground. This is ground. Okay. So calculate the work done by him on the luggage. Question पूछ है, solve कर. Picture देखना है. Calculator. Work done. जल्दी बता. सिर्फ वो बताएगा. Everybody do the calculation and see in the notebook. He will tell how much is the work. जैसे ये हो गया कि मेरे को ensure करना है कि तुझे समझ आ गया. और फिर कैसे कैलकुलेट कर. ठीक है? कैलकुलेट करना. बात. You do it in the notebook. I've asked him and he will ask. Okay.
So work done is, what is work done? Then S is equal to S is बताया तो है। Sir, acceleration क्या है? Acceleration क्या है? Acceleration क्यों चाहिए? इस क्वेश्चन में acceleration है ही नहीं। So that's 15 or 1.5. This is 15 kg. This is displacement, right? It lifts. So Is it 1.5 or 15? huh? Is it 1.5 or 20? This Yeah. 1.5 meter above the ground. सर हो गया 5 into कर दिया मैंने. हाँ कितना है आंसर बताओ? 25.5 25 जूल क्या किया तुमने? 15 into 1.5 हाँ. नहीं सर. गलत है। गलत है सर, 0 होगा ना ये. उसने पूछा था एक्सेलरेशन क्या है? अरे हाँ सर वो 0 है. ये फोर्स क्या होता है? What is ये तो मास है मास. वही तो पूछ रहा हूँ force Force is weight. 15 into 9.8 force for this force So force acting on it is equal to its weight, which is okay. Mass देखो यही मिस्टेक करते हो तुम. मास दिया हुआ है. स्टूडेंट अगर तुम g कितना ले रहे हो? 10 ले रहे हो? सर 10 लिया हमें g given है क्या क्वेश्चन में नहीं है. मेरी बात ही वही होती है सर नेगेटिव होगा ना Mass is 15, g होगा 9.8 versus 1.5. For simplicity, you can take g as 10 also. that 255 So कितना होता है ये देखो भी करके इसको. So is it necessary to take always 9.8? If it is not mentioned, always 9.8. 9.8 वाला Okay. Alright. If it is not mentioned, take 9.8. Otherwise, take 10. If it is mentioned. So let's say in this question it is given as 10. So this is 15 into 15, which is 225 joules. Got it? So many questions only mass is given. Then you have to actually first calculate force. that 249.9 ठीक है. So in this solution में they have given g as 10. So I have taken 10. Okay. So everybody understood? So next is Here it isn't mentioned 9.8 to get it 10. Gravity isn't mentioned here to get it 10. so I said when it is not mentioned, you have to take 9.8. Here they have mentioned 10, then you take 10. See, in the question they have not mentioned, but in the solution they have taken as 10. So you can take 10 in this question. But it's alright, you take 9.8 or 10, so it depends on your teacher then. It depends on the question. Depends on the teacher कि वो गलत तो नहीं कर रहे. देखो question में अगर g के बारे में कुछ बोला नहीं तो तुमको 9.8 ही है. Yes, sir. ठीक है? Otherwise they will say take g equal to 10. Then you take 10. अगर 10 नहीं बोला है then you have to take 9.8. Understood? Am I clear? Okay. Next question is define 1 joule of work. 1 joule of work. कैसे डिफाइन करोगे? What will you do? The displacement or force 1 होगा. Yes. When a 1 Newton force acting on a body displaces it by 1 meter, we will say work done on the body is 1 joule. तो क्या था? W is equal to force into displacement था. Therefore 1 joule must be equal to 1 Newton into 1 meter. This is 1 joule. So mathematically ऐसे लिखोगे तो then English में you can translate it. So what will you write?
1 Sir, work is equal to 1 joule joule. of work is said to be done on the body when it is displaced by 1 meter then under the influence of 1 Newton force on it. Okay? So this is how you will define what is joule is Newton meter. Newton meter itself is given in name joule. Sir, work is equal to 1 joule. What is work is equal to 1 joule? नहीं जब 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी पे और वो फोर्स बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस करेगा, then we will say the work done on the body is 1 joule. So joule is nothing but Newton meter. So 1 joule is equal to 1 Newton meter. Got it? Is it clear? Next question. So write fast. Sir, you can use it the second part. Yeah. Yeah. Okay, fine. So everybody understood what is 1 joule of work? Yes. Okay. Next question is a pair of bullocks exert a force of. So do you have this question in your volume? A pair of bullocks. Just check. Numerical 4. So there is a pair of सर थर्ड वाला नहीं कर रहे ठीक है, so there is a pair of bullocks. It is plowing a field. Okay. So how big is the field? So it exerts a force. So there are 2 bullocks actually. One bullock here also. ठीक है, दोनों मिल गए. They are plowing a field. So the force applied is 140 Newton. The field being plowed is 15 meter long. कितना बड़ा है? 15 meter. Okay. How much work is done in plowing the length of the field? सर दो है ना ये जानवर Sir, 140 Newton each or by from one. क्या हुआ? Everybody is focusing on the bullock cart, is it? These are bulls, 2 bulls. Okay, they are just plowing a field. So the force applied on the plow is 140 Newton. And what is the length of the field? 15 meter. क्या बात है, क्या बात है. ठीक है, what is the work done? सर 4200 joule Thank So you. this is अब पूरा 32 calculation less. करें. 140 into how much is this? 14 into 15. सर दो है ना दो है ना टोटल फोर्स कितना है? दोनों ने मिलके फोर्स कितना जनरेट किया? 140. मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा मत सोच भाई, जितना पूछा उतना ही.
क्वेश्चन बताया ना मैंने? नहीं दोनों तो बोल्स वॉल्यूम में नहीं है नहीं है ना? बैठो ना क्या है वहां बैठते अरे दिख नहीं रहा हूँ जो इसके लिए कोऑर्डिनेट हो सकता है। देखो बहुत हंसी क्यों आ रही है बेटा? मुझे सर जोक मार रहा है मैंने चुपचाप लिख रहा हूँ तेरे को और उस जोकर को दोनों को बाहर भेज दूंगा मैं। सर मैं सर क्लास में बैठ के मत मस्ती करो। मैंने उसको स्टार्ट के क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ उसमें मैंने क्या किया मैंने बोला था ना लास्ट वार्निंग है। तो मैं तो लिख रहा हूँ उसमें उन्होंने तो मैंने पूरा क्या कर किया, दिया क्या नाम ले रहा है मेरे से उससे कोई मतलब नहीं, वो कौन क्या लिख रहा है और कौन जोक मार रहा है, सीधे उठा के बाहर कर दूंगा अगली बार। शांति से बैठो। अच्छा ये समझ आया क्या सबको? हाँ तूने क्यों तू क्या 140 into 2 सर आपने बाद में बताया कि 2 है तो मुझे लगा दोनों एक साथ सोचने लगा। अरे हल के समझ क्या गया सर। व्हाट इज माइंड? एक ही हल है ना इधर। सर आपने बाद में ड्रॉ किया ना तो मुझे लगा 2 है। मैंने ड्रॉ तो नहीं नहीं ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सुनो क्वेश्चन क्या लिखा है। A pair of bullocks exert a force of 140 Newton. तो pair is one body. जो pair है ना वही 1 unit है, ठीक है? सर ERG मतलब एनर्जी And the field being plowed is ERG मतलब एनर्जी होता है ना arg unit है, CGS unit is अच्छा ये जूल बताया था ना मैंने, वहाँ पे और लिख लो। SI unit of work is joule, CGS unit is arg, ERG। 1 जूल इज इक्वल टू 1 आवर। नहीं पागल है क्या? सर कैसे बना? सर वाला velocity equal to what? So it is written in the volume sheet. CGS unit is Velocity equal to constant, uniform motion. See, you shouldn't be asking about what is uniform motion. I Constant velocity, right? Same velocity. CGS unit. So this is the problem when you come at different times, right? So everybody now be together. Then I'll proceed further. Complete, finish all the writing job. Let me see everybody's notebook. सर ड्राइंग अच्छा है क्या चीज? ड्राइंग हाँ वो नहीं ड्रॉ मत करो। सर मैंने कर दिया ड्रॉ। ठीक है। वैसे ड्रॉ कर दिया तो भी चलेगा। डेट ना अभी स्टार्ट किया। बिंदु में डेट क्या है? So everybody would write today's date, today's topic, okay, without fail in every class. Write in your notebook everything which is discussed on board. All right. So you have to also note in the definition of work in the beginning, the CGS unit of work is ERG, arg. यार ये मतलब अर्ग बोलते हैं। अब तेरा नाम का क्या मतलब है? बस वैसे ही we just give a so one जैसे न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या है? फोर्स का सीजीएस इज 9 है ना? तो सीजीएस है, दो टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 7 अर्ग। CGS यूनिट अलग कंट्रीज में यूज होता है। अब कहीं नहीं यूज होता है, वो पहले किसी जमाने में यूज होता था। नाउ एवरीबॉडी यूजेस एसआई यूनिट्स। ओके, एसआई इज इंटरनेशनल, इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फ्रांस में सिस्टमी इंटरनेशनली, दैट इज फ्रेंच। सर 10 raised to the power 7 है ना? ठीक है, समझ आ गया? सो ओके, तो ये रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 7 अर्ग। Okay, now we will learn about energy. Can I erase this? Yes. Yes. First, let us define what is energy.
work. It is capacity to do work. अगर एनर्जी नहीं होगी तो कुछ काम कर पाएंगे क्या? Ability to do. Affinity. Ability. Ability. Yes. So it is Capacity to, it is defined as a capacity. capacity or ability, same thing. Capacity or ability to do work. So whenever I say work, it is physical work. ठीक है? यूनिट ऑफ एनर्जी अभी देखो, अगर हमारे पास एनर्जी है तो ही हम काम कर पाएंगे। नहीं, एनर्जी एंड वर्क आर इंटर रिलेटेड, एंड व्हेनेवर वी आर डूइंग वर्क वी आर स्पेंडिंग एनर्जी। Firstly, नहीं, directly proportional। ज्यादा वर्क ज्यादा एनर्जी लेगा, so it is a direct proportion, not inverse। समझ आया? So in other words, So there are 7 types of energy. yes, in other words, a body doing work which does work loses energy। ठीक है? In other words, a body which does work loses energy. Therefore, work and energy are interrelated. Okay? Therefore, work and energy are interconvertible, you can say। ठीक है? इसलिए एनर्जी का जूल है, क्योंकि वर्क का जूल है तो एनर्जी का भी जूल ही होना चाहिए। समझ आया? तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी is also just like that। समझ आ गया? इसलिए दोनों का यूनिट सेम है। और सीजीएस क्या हो जाएगा? आर। ठीक है? अच्छा, now we will learn about types of energy। Now we are human, right? We are human, right? So we need to survive। To survive we need to work, and to do work we need energy। ठीक है? तो एनर्जी होगी तो ही हम काम कर पाएंगे। क्या बेटे? वॉशरूम तक पहुंच जाएगा कि भेजो दोनों के साथ? है? चला जाएगा। ठीक है। So what is the primary source of energy for us? Food. Food. Direct food. Energy Energy drinks. Sunlight. Light. Sun actually। हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है? सन से आती है। You have to go back like millions of years। इलेक्ट्रिसिटी कितने साल से? Roughly 100 to 100 years, उससे ज्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी रिसेंट। तो उसके पहले ह्यूमंस नहीं होते थे। 6 बजे तक है। 6 बजे तक है ना? हाँ, तो we can continue, right? Yes. No need of break। Yes. Next lecture you have? This is the only lecture you have? Yes. We'll continue। So the primary source of energy is sun only, even today also। sun नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बना सकते। You agree? sun नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे?
लाइट ही नहीं होगी तो बनाने की जरूरत भी नहीं होगी वैसे, ठीक है। सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स जिंदा नहीं रहेंगे, प्लांट जिंदा नहीं रहेंगे तो फूड नहीं होगा, ये तो डायरेक्टली फूड में पहुंच गया। So there is a big cycle, okay? So sun is responsible. Sun, air, वो पंच तत्व. What are they? पेट्रोलियम के लिए सन का इम्पोर्टेंस है। हाँ, पेट्रोलियम के लिए। हर एक चीज के लिए सन चाहिए। कैसे क्रिएट होगा? सुनो, पेट्रोलियम किससे बनता है? किससे बनता है? अरे इधर देख, तूने सवाल कैसे पूछा था उससे या मेरे से? तो इधर देखना, फॉसिल फ्यूल्स किससे बनता है? Remains of plants and animals. Plants और animals है, मतलब क्यों है? पहले तो था ना, मरने से पहले। लाइफ ही पॉसिबल नहीं है सन के बगैर। Is it clear? Okay. तो अब देखो, गुड थिंग इज, तो अगर हमको सारी एनर्जी सन से आती है तो हम घर में सारा काम सन से कर रहे हैं क्या डायरेक्टली? नहीं ना। Good thing about energy is energy can be converted from one form to other convenient form, conveniently usable form. जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये conveniently usable, ठीक है? So we अभी इलेक्ट्रिसिटी से पहले आप क्या करते थे? What was the source of energy? कैसे खाना कैसे बनाते थे? Candles पे, firewood, right? Yeah. Used to burn wood. और बाद में क्या करने लगे? कोल। वुड से भी ज्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है? कोल से, है ना? ये सारी चारकोल, कोल सब वही हो गया। So that is chemical energy is converted into heat energy. So for that we need to know, since energy can be converted from one form to other, so we need to know what are the available types of energies are, right? So tell me. So most primitive form is heat. उससे भी पहले, हीट से भी पहले क्या था? लाइट। सो लाइट, साउंड, ये सबसे पहले थे, लाइट एंड साउंड, राइट? Then heat. In that order. Then electrical. motion, mechanical, right? Then electrical. Yes. So actually we can say chemical here because burning से associated है chemical. So burning or heat interrelated. Got it? So I am writing it in a order so that you will remember it. So how many? 1, 2, 3, 4, 5. Then electricity. So electrical. Then nuclear. These are the 7 types of energies. There could be solar, wind, everything is interrelated. वो सब light में आ जाएगा. Light नहीं होगी तो wind भी नहीं होगी. Okay? These are the main 7 forms of energy. So और भी है. और इसी के variant, इसके derivatives है. These are the 7 categories of energies available today. ठीक है? तो हमारी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है? 1.3 बिलियन, राइट? ऑलमोस्ट। तो हमारी एनर्जी, हर बंदे को खाना चाहिए, तो हर एक बंदे के ऊपर एनर्जी खर्च हो रही है ना? सब जिसके पास भी घर है सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी, तो एनर्जी की बहुत मारामारी। इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे बनाते हैं? बाय बर्निंग कोल, थर्मल पावर प्लांट, और बाय बिल्डिंग डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल्स। हाँ, वो अभी आ रहा है, बट प्राइमरली दोस आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल क्या है हमारा? ये सोर्स है, ठीक है? तो मेनली हम जो मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है आज की डेट में? इलेक्ट्रिकल। सो व्हेन वी यूज इट, इट डजंट क्रिएट पोल्यूशन। सो बहुत सारी चीजें हैं, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी इजी टू डिस्ट्रीब्यूट, ओके, ऑल सच थिंग्स। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन इटसेल्फ बी प्रोड्यूस्ड बाय सो मेनी थिंग्स। फ्रिक्शन। Now, we will learn in this chapter about mechanical energy. So, what are the 2 types of mechanical energy? It consists of kinetic and potential.
potential. So in this chapter, we are only going to learn about mechanical energy and these two forms of energy. So let us understand what is mechanical. Mechanical energy is kinetic is related to motion of the body. So any moving body, like if I throw a stone on his head, what will happen? Strong बच्चा है, no? What will happen? नहीं होएगा। अरे ज़्यादा मत बोलो, सुनो। I will give you opportunity to speak. चले सुनो। मैंने क्या बोला? Kinetic energy is energy possessed by a moving body. ठीक है ना? So if I right now, and there is one more energy which is energy possessed by virtue of its position. Does this bottle have energy right now? No. Gravity. Huh? It does have it. How will you demonstrate it? So it has water, we can convert water into energy. By position. By potential. Gravitational. So does it? I said, and each energy can be converted from one form to other. Okay? So what if I topple this bottle? Will it make sound? What is sound? Energy. So whatever energy is stored right now, is it stored energy, potential energy? If this topples or falls down, so this was sound and heat. Okay? How friction. Just flap. Flap. You will heat and sound. So any bodies which collide with each other, it will produce heat. इसमें दोनों टकराते हैं metal, बहुत ज़्यादा friction होगा तो उसमें से चिंगारी निकलती है. What is it? Heat and light and sound. Got it? भैया काली से चिंगारी निकलती है इसमें. So it will depend on the body. Some stones earlier, how when there was no matchbox, how did we cause fire? Friction. Huh? Rubbing the stone. Rubbing the stone. So due to friction, heat is produced. Okay. So these things humans have learned over time. Yes. So let's learn more about kinetic and potential energy. So total of kinetic and potential energy, sum of kinetic and potential energy possessed by a body is called its mechanical energy. Okay. So mechanical energy. Yes. आपने बोला कि वो बॉटल के अंदर एनर्जी स्टोर है तो उसको हम केमिकल एनर्जी में कैसे बदलते हैं हाँ? उस बॉटल में केमिकल एनर्जी में कैसे बदलते हैं Chemical energy is a different energy. Chemical energy में ये नहीं होगा, coal होगा या wood होगा. जब तू उसको burn करेगा, तो तूने थोड़ा सा fire दिया, थोड़ा सा, but वो बड़े fire में convert हो गया. So anything which is burning, it is producing heat. तो सर एक ऑब्जेक्ट में सारे एनर्जी प्रॉपर्टी नहीं, इसको अलग-अलग forms होंगे. Got it? In our body, right now, what kind of energy we have? Chemical. जो food खा रहे हैं वो क्या है? Chemical बन गया ना वो अंदर जाके. Then it enables us to run, to read, to lift objects. वो सारा क्या हो गया? Mechanical. जो भी movement हो रहा है, machines, car, wherever there is motion involved, everything is mechanical. So energy in action, most familiar form is mechanical. To keep things moving around us. So everywhere kinetic and potential energy has a role. So that is what we are going to learn next. Mechanical energy is of the body. Is sum of its kinetic and potential energy. सबसे पहले तो ये समझो
Now we define what are these. ठीक है? What is kinetic energy? Of a body is energy possessed by it by virtue of its motion. ठीक है? This is kinetic energy. So any moving object will have energy. Next is potential. हाँ? अभी काइनेटिक एनर्जी जिस बॉडी में है, ठीक है, वो बॉडी वर्क करेगी, एनर्जी है तो उसे वर्क करना चाहिए, राइट? तो उसका एग्जांपल देखो, जैसे कैरम बोर्ड पे स्ट्राइकर, हम स्ट्राइकर को मूव करेंगे, किसी कॉइन को स्ट्राइकर जब हिट करेगा तो कॉइन मूव होगा. When striker had kinetic energy, that let the other coin move. So the force exerted by the striker, okay, from where the force came? Because of the energy. So then it moved the coin on which it hit. तो सर एनर्जी ट्रांसफर हो गई ना? हाँ, स्ट्राइकर से कॉइन. Light. जो एनर्जी ट्रांसफर जब होती है वही वर्क डन बोलते हैं. मतलब वर्क किसने किया? स्ट्राइकर ने किया. किस पे? कॉइन पे. कॉइन पे वर्क किया तो कॉइन में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी. तो मैंने क्या बोला था, जिस बॉडी पे वर्क करेंगे उसका एनर्जी गेन होएगा, और जो बॉडी वर्क करेगी उसका एनर्जी लूज होगा. तो स्ट्राइकर की एनर्जी लूज हुई, कॉइन की एनर्जी बढ़ गई. ऐसा गॉट इट? सो दिस इज अ एनर्जी ट्रांसफर. ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर वर्क डन होगा. किसी का एनर्जी कम होगा, किसी का एनर्जी बढ़ेगा. जिसका एनर्जी बढ़ रहा है उस पे वर्क हो रहा है, जिसका एनर्जी कम हो रहा है वो वर्क कर रहा है. कॉन्टेक्स्ट, यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट? ओके. So now what is potential energy? It is the energy possessed by a body. It is the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration. ठीक है? So it is the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration. ठीक है? So suppose this is Earth. Suppose you write down, then I'll explain what is potential. Anybody remembers last lecture कौन से डेट पे हुआ था? Nine. ना सच्ची. हाँ, so that was दो महीने. बहुत बड़ा गया था ये. And I'm seeing many students have increased. Who are new students? Raise your hands. Only you. अच्छा, वो भी है. बाकी ये एक टीचर एक और है ना बच्चा, वो causes of what is his name? Aryan Roy. नहीं वो नया नहीं पुराना ही है आपका. मालूम है. क्या बोल रहे हैं? सर बाहर आके बैठा था.
बंद क्यों नहीं है? ठीक है? So kinetic energy सबको समझ आ गया? Any body which is moving has a kinetic energy. Potential energy कैसे समझेंगे? So see, let us say this is Earth surface. Okay? This is Earth surface, this tabletop. Can this duster on its own go below Earth? No, right? So this is the least energy possible, right? But now, what I am doing is I am lifting it. So what did I do on the duster? I applied force on the duster and the duster moved this much displacement. So I worked on the duster. Okay? So who worked? I. So I lost energy. Who gained energy? Duster gained energy. So this energy is stored in the duster now. Okay? So whatever energy it has stored now, that is its potential energy. Now what about the position? Its position earlier was ground. Now it is at some height. Okay? So then there is some potential energy stored by change of position of duster. Will always potential energy will be stored in the body due to change? No, so the work should be done. The work should be done on the body against some force. Okay, is there any force acting on the duster? Right now, what are the forces acting on the duster? Gravitational force. It is always acting. So when it was kept on the table, the reaction of the table held it against the gravitational force. Okay, right now I was holding it against the gravitational force. If I pull my hands, it will come down. Okay, because gravity is always acting. And you did not listen the energy because I held it. So it depends on the type of objects. Got it? So this much energy it had got converted into sound. So much energy. Now imagine if it was a finger. So it's okay. Need a volunteer. Come. Okay, then go. Okay. So potential energy is more dangerous. It is stored energy. Right? What is the other example? So this was the change of position example. So when I change the position of the duster, it stored energy. Okay. So when you remove the force because of which energy came in it, then it will get converted into kinetic energy. So whatever potential energy it had, when it started moving, the total potential energy got converted into kinetic energy just before hitting the ground. Okay? So this was a case of conversion of potential into kinetic. Second is, suppose I have a, I didn't get it. what you didn't get it? Potential. What is it? Position. When you change the position of the body, say from ground to up, now it has energy. When it was on the ground, it has no energy. Now I change its position from ground to height, some height. It has some energy. How to know it has energy or not? Force to life. Oh, it will create sound, no? When you leave it. Like your bottle example. Okay? So now it has potential energy. Now the entire potential energy now is converted into kinetic when it hit the table. After that, what happened to its potential energy? It's gone. Sound is dissipated in the environment. Yes. Okay. अच्छा और एक एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का जो भी स्प्रिंग वाले डिवाइसेस होते हैं लाइक रिवॉल्वर सो व्हेन यू लोड इट सुन रिवॉल्वर के बारे में बात कर रहा हूं व्हेन यू लोड द गन राइट व्हाट डू यू डू उसका ट्रिगर पुल करेगा राइट देन यू लोड इट ओके देन यू रिलीज द ट्रिगर सो व्हेन यू पुल द ट्रिगर द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड so it has potential energy and the spring is in its equilibrium position. So this is the relaxed spring. This is the relaxed spring. Okay. So now let us say this is the cartridge. Gun बनाओ ना. gun बनाओगे तो gun बनाओ अच्छा.
इसके अंदर का भी This is the trigger. ठीक है? Okay. So now, when you pull the trigger outside, ठीक है? पहले पुराने जमाने में ऐसा खींचते थे और इसको खोल के ये remember? साइड से खोलते थे और उसमें बुलेट्स डालते थे। हाँ ये देखा। ये जब बुलेट डाल के इसको लोड किया और फिर इसको पीछे खींच के उसको रिलीज कर दिया। ठीक है? तो पॉइंट वो नहीं है जो समझना है वो समझो। समझना क्या है? अरे सर गन क्यों निकाले? उसके अंदर क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, ठीक है? तो इमेजिन ये जो बुलेट रखी थी ना, ये स्ट्रिंग से इसको अटैच किया हुआ है, ठीक? तो ट्रिगर है ये। जब तुम इसको पीछे खींचोगे तो ये स्प्रिंग कैसी हो जाएगी? ऐसी स्ट्रेच हो गई, ठीक है? और ये कहाँ पे आ गया? इसके साथ में इधर आ गया। बुलेट तुम्हारी यहाँ पे है, ठीक? जब तुमने ये इसका ट्रिगर रिलीज किया, ये क्या पीछे खींचता है ना, तो ये अटक सर्कल क्या है? स्प्रिंग है नहीं वो सुन ये जब पीछे खींचा ना तो यहाँ पे आके अटक जाएगा कहीं पे लीवर। जैसे ही तूने लीवर इसका रिलीज किया तो ये निकलेगा, स्प्रिंग इसको आगे खींच लेगा, फिर ये जाके क्या करेगा? इसको हिट करेगा, फिर वो बुलेट निकलेगी। ऐसा मैकेनिज्म स्प्रिंग और बो एंड एरो। सर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये लो। Suppose you have a bow and arrow. सर यहाँ देखो सर लाइव एग्जांपल चल रहा है। क्या रे, कुछ हिला भी नहीं होगा। तो बस स्प्रिंग की गलती मेरी है। अगर उसने आपको हिला दिया तो कंपनी का लगेगा। Now listen, this is a string of the bow, right? Elastic string है, ठीक है? So right now, अगर तुमने ऐसे एरो रखा, nothing will happen, ठीक है ना? You pull it back. तो अभी ये कहाँ पे आ गया? You stretched it, ठीक है? bow किधर आ गया तुम्हारा? अच्छा, एरो किधर आ गया? पीछे, ठीक है? Now this time this is the old position, ठीक है ना? अभी तुम्हारा एरो इधर, so it is stretched. What is the nature of elastic? Once you remove the external force, so this is now, it will try to go back to its original, what do you call? Original form, original shape, right? So ये क्या हो जाएगा? Right now it is stretched. The moment you leave it, so in this situation it has potential energy, because now this is change of configuration. Got it? This is not example of change of position. This is example of change of position. कौन सा? Thruster. तो सर जब काइनेटिक एनर्जी रिलीज करेंगे सामने एनर्जी भी रिलीज होगा। काइनेटिक एनर्जी जब किसी बॉडी को टच करेगी तब, जैसे मैंने पत्थर फेंका तो दूसरे को लगा, वॉल पे लगा, तब व्हाइल मूविंग इट विल नॉट शो एनीथिंग, उसको किसी के साथ में टकराना पड़ेगा तो अगर मूव करते हुए अगर एकदम फास्ट मूव करें वेट के साथ अगर वो कर रहा है या फिर कुछ लगा है उसके ऊपर फ्लाई हो रहा है ऐसा, there has to be some interaction. सर मैंने एक मूवी में देखा था, पता नहीं क्यों रह गया सर, वो स्पेसशिप जब स्पेस से नीचे गिरता तो उसमें आग लग जाती है। स्पेस से नीचे गिरता है वो तो एटमॉस्फेयर, जब वो आग कब लगती है? जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। स्पेस होता ही नहीं है, तो क्या स्पेस रॉकेट होता है, शेप होता है? देखो जितना पता है उतना ही नॉलेज नहीं है। आप बोलो स्पेसशिप वो होता है which can carry humans, जैसे एयरक्राफ्ट है ना, वैसे स्पेसशिप होता है। शिप में क्या जाता है? स्पेसशिप क्या नाम है स्पेसशिप का? कोलंबस। जो नासा भेजता है शटल, स्पेस शटल भी बोलते हैं ना, स्पुतनिक का वो बहुत पुराना शुरू। सर वो आग लग जाती है उसके नीचे। एक स्पेस जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना तो एयर के साथ उसका फ्रिक्शन होता है। सर लेकिन सब में आग लगेगी ऐसा जरूरी नहीं है, जो डिजाइन अच्छा नहीं है उसमें आग लगेगी। नहीं तो एरोप्लेन में भी तो आग लग सकती है ना। एरोडायनामिक्स
So वो ऐसा डिजाइन करते हैं the material which is like we use on the outer periphery. सर आपने क्या बोला वो सब पे वो फ्रिक्शन से आगे लगती है वहाँ पे कुछ तो बोला है सुनाई फ्रिक्शन से आग वहां नहीं लगेगी. एक इग्निशन टेम्परेचर होता है हर सब्सटेंस का. अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है तो आग नहीं लगेगी. लो होगी तो लगेगी. तो we have to choose a proper appropriate material. ठीक है. सर एक ये समझ में आया. ये बहुत एग्जांपल क्या है चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है. सर यस स्पेस भी तो बनाती है. हाँ बनाती है ना. सर फ्लोरेशन भी बनाती है. बहुत सारे हैं अभी. ठीक है. So this was change of position and change of configuration. ठीक है. So now expression for kinetic energy. सर मुझे एक्चुअली ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल में डाउट था. Discuss it later on. Let me derive this expression for kinetic energy now. ठीक है. So consider. तो कैसे निकालेंगे kinetic energy का expression? So consider a body half into motion with the velocity moving with velocity u. Initial velocity u. There's just. Pay attention. This is important. सर ये एग्जाम में आएगा डेरिवेशन के लिए. Yes. Initial velocity. pressure for K. Yes. Kinetic energy. K. K is the symbol. Consider a body moving with initial velocity u. Now, a force applied on it is applied on it. Which causes acceleration in the body. Okay. Now when you apply force से क्या होगा बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी. ठीक है. Due to which its final velocity becomes v. सर हमने इसका डेरिवेशन किया. मालूम है मेरे को. मैं फिर से करवा रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि तुम्हें पता तो है नहीं कुछ इसलिए. Its final velocity becomes v after it covers distance s. मतलब फोर्स कितनी देर के लिए काम कर रहा है उसके ऊपर. s डिस्टेंस तक फोर्स लगा है. ठीक है. देखो अभी इसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ. इस पे लग गया फोर्स अभी यहाँ पे. सर इस पे मास मेंशन नहीं करना है. क्या हो रहा है? सर इधर है इस पे मास मेंशन कर सकते हो. और आप एक्सप्लेन कर सकते हो. और क्या कर रहा हूँ एक्सप्लेन ही तो कर रहा हूँ. A force acting body now it's लिख दिया पूरा. First you write it then I will. तो ये एक बॉडी है जिसका मास कितना है m. Initially it was moving with speed u. Okay. अब इस पे क्या लगा फोर्स लगा तो ये एक्सेलरेट होगा. नया स्पीड क्या हो गया v. इतना चलने के बाद
एस चल रही है, ठीक है ना? इतनी देर तक फोर्स लगा, जैसे अब कोई दौड़ रहा है पीछे से किसी ने धक्का दिया उसे, वो ज्यादा तेज दौड़ेगा। नहीं वो दौड़ रहा है तो जो पीछे से धक्का दे रहा है उसको भी दौड़ना पड़ेगा। हाँ, तो तभी तो फोर्स कौन लगा रहा है? जो फोर्स लगा रहा है उसको दौड़ना ही पड़ेगा। जैसे अगर ये वाला ये दौड़ रहा था, और ये बात क्या नाम है? जैद दौड़ रहा था, तेरा क्या नाम है? अरमान। और अरमान ने उसको पीछे से धक्का दिया, तो जैद समझो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा था, और धक्का देने के बाद 7 मीटर हो गया। 0 जाएगा, गिर जाएगा। नहीं, तो गिरेगा तो और तेज गिरेगा, समझा ना? गिरेगा तो तेज गिरेगा वो, नहीं तो अभी डेमो दिखाते हैं। ठीक है नहीं सर, नहीं जय दादा। नहीं वो दौड़ेगा तू धक्का देगा। ठीक है चलेगा चलेगा। हाँ समझ जाए वो, सब इसका इलाज सोचना पड़ेगा। सही ठीक है, तो अभी हम इसको डिराइव करेंगे। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? सो वर्क ऑन द बॉडी, जो वर्क किया वही तो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बोला था ना? जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट। ये तो होगा। So what is K? Therefore K is equal to work done कितना हो गया? F into S, करेक्ट? क्या होगा? F into S, और F क्या होगा? उसका जो मास था, मास into एक्सीलरेशन into S। अब यहां से यहां जाने में S कितना हो गया? तो कैसे आएगा? ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। लास्ट टाइम डिराइव कराया तो भी ये डिराइव करो। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में कुछ कंफ्यूजन हुआ। सर आपने वो क्या लिखा है वो ऊपर? क्या? और it means क्या? Consider a body of mass m moving with initial velocity u. Now a force F is applied on it, which causes acceleration. अच्छा ये पढ़ने में नहीं आ रहा है क्या? Causes मेरा कहीं पे S ऐसे रहता है, कहीं पे ऐसा रहता है। In the body, due to which its final velocity becomes v. v कब होता है? After it covers distance s. Distance or displacement s. Distance only or displacement नहीं. ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? क्योंकि एनर्जी और वर्क सेम है। ठीक है, so therefore but what is by third law of motion, by third equation of motion, क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v square is equal to u square plus 2as. therefore s क्या हो जाएगा? v square minus u square divided by 2a. ये हो गया, ठीक है ना? so now what we will do is we will substitute it in this. So substituting 2 in 1 क्या आएगा? by substituting 2 in 1 MA into A is square equal minus to U square 2S. क्या होगा? MA into ठीक है, so A कैंसिल हो गया,
So this is equal to. Same ही बोलना. So this is m a square minus u square a2 bar item. Therefore, k is equal to mb square minus u. ठीक है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हम बोलेंगे ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी. So therefore, k is equal to so ये वर्क डन, अच्छा एक मिनट, ये वर्क डन लिखते हैं पहले इसको वर्क डन. Therefore, work is equal to this. Kinetic energy क्या है? Work done है. Therefore, work done क्या है? तो ये work done का एक्सप्रेशन है, ठीक है? So this is the work done. Is equal to k final minus k initial. U. Where AF is final kinetic energy. Final क्यों? क्योंकि V हमारी final velocity और U क्या है? Initial velocity. सर हाँ बोल. लेफ्ट फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं ना. Initial kinetic. एक सेकंड. Initial. ये टाइम कहाँ है? सेकंड इक्वेशन में क्या है? S is equal to UT plus half AT square ना? T चाहिए ना उसमें. तो इसमें क्या है? हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है और एक्सीलरेशन इसके. तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारा? हाफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. तो अब देखो अगर इनिशियली अगर u was 0, अगर बॉडी रेस्ट पे होती, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अभी स्टेशनरी है, अब इसको मैंने उठा के फेंका तो रेस्ट से फाइनल v पे आया, उस केस में u 0 हो जाएगा, तो हमारा वर्क डन इक्वल टू ये होगा. ये हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटलीस्ट राइट. सो इफ इनिशियली the body was at rest, then u is equal to 0. Therefore, w is equal to half mv square. Okay. Hence, k is equal to half mv square. Okay, work done is, since work done is, since work done on the body is appearing as kinetic energy of the world. सबको समझ आ गया? ठीक है ना? तो जो वर्क डन किया यही एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ mv स्क्वायर. सर mv स्क्वायर पूरा डेरिवेशन आएगा. आ सकता है. अब तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं. बहुत सिंपल एक्चुअली. इट्स 2 स्टेप्स. अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ. तुम्हें जब खुद आ जाएगा तो 2 मिनट नहीं लगेगा. सिर्फ मैथमेटिकल डायरेक्शन लिख सकते हैं. हाँ मैथमेटिकली फुल एक्सप्लेन नहीं करना लाइक दिस प्लस एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, मैथमेटिकली कर दो, चल जाएगा. टीचर समझ जाएगा व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. ठीक है. वैसे ही हम एक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जो 1 मिनट में हो जाएगा.
आपने इसी टाइम भी वही बोला था एक्सप्रेशन होता है। चेक करो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम? जो डस्टर वाला एग्जांपल था ना वो फॉलो करें। सो कंसीडर बॉडी ऑफ मास स्लिप हेड और surface. Height h against gravitational force against gravity। ठीक है, तो ये अपने यहाँ से इसको उठाया, यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे। इसका वेट कितना आता है? पोटेंशियल एनर्जी work done on lifting ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या है? U। तो ये कितना हो गया? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कितना है? वेट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। ये वेट कितना होता है? mt h। यही है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। कितना मिनट लगा? अभी इसके लिए हमें मिनट टू चलेगा। बहुत ज्यादा चलेगा। समझ में तो आया नहीं? समझ में आया कि नहीं? एक्सप्लेन कर क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी मास ग्राउंड से लिफ्ट किया गया है। हाँ, मास ग्राउंड से लिफ्ट किया। हाँ, तो उसमें कितना वर्क किया तुमने? वर्क इज ऑलवेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? वेट। भाई जितना बॉडी का वेट है उतना तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना तुम्हें, ठीक है ना? तो फोर्स ऊपर लगाया हमने कितना? उसके वेट के बराबर। और वेट कितना होता है? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? h। सबको समझ आ गया? देखो s इज इक्वल टू सर तो कितना वेट उसको ऊपर लिफ्ट करने में लगेगा? जितना उसका वेट है कम से कम उतना तो तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तब तो ऊपर जाएगा। समझो उसका वेट 50 न्यूटन है, तो हमको फोर्स 50 न्यूटन ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 50 न्यूटन नीचे लग रहा है उसमें। So height gravity के अनुसार। यस, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। मैंने क्या बताया? स्प्रिंग जब तुमने खींचा तो उसको रीस्टोरेशन फोर्स पीछे लेके जा रहा है, तुमने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, तब पोटेंशियल आएगी। पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगी किसी भी बॉडी में जब हम उस पे वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट एनी फोर्स। जैसे ग्रेविटी लग रही है तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अगर मैं इस बॉडी को ऐसे मूव करता हूँ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसका लेवल तो सेम ही है, सरफेस ही है ना। लेवल हाँ, हाइट से फर्क पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ, ज्यादा फोर्स लगेगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ठीक है, ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो मेरे पे जो फोर्स लग रहा है वो कम है,
लेकिन अब मुझे किसी ने ग्राउंड से ऊपर कर दिया, अब मैं ग्राउंड पे चल रहा हूँ, मुझे चोट लग रही है, लेकिन अगर मुझे किसी को उठा के छोड़ दिया, मुझे चोट लगेगी, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, जाके आ ऊपर से नीचे आ गया, सीधे बोला ग्राउंड पे नहीं, ऊपर से नीचे। सर अगला से भी क्लास करना पता नहीं टाइम टेबल में है कि नहीं? नहीं है सर। तो तू नहीं आएगा ना? आऊंगा सर 12 वाला भाई सर हाँ भाई, इसमें कोई डाउट है तो रुक सकते हैं। कौन सा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, सॉरी। डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है? तो अभी क्या लिखा है यहाँ पे? दोनों मास कितना है? 2 kg है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, अब ये जो फोर्स है ये दिया है 6.67। ओए माइसी एक्सीलेंट लोग ठीक है, पूछता है। जी कितना है? जी भी इतना ही है 6.67। -11 ही है, क्या है? m कितना है? 2 और ये कितना है? d स्क्वायर। d तो निकालना है, ये कट हो गया, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 2, तो d इज इक्वल टू 2 और क्या? 2 थैंक यू सर।